सो गई हैं क्या सिस्टर? अरे भैया सोई नहीं हूँ, खाना बना रही हूँ। सॉरी वीर भैया जी। वीर भैया जी सॉरी, खाना बना रही थी, बर्तन धुल रही थी इसलिए नहीं बोल पाई। खटपट खटपट कर रहा है ना। रवि भैया अभी आते हैं ना तो बोलते हैं बर्तन वाला, इसीलिए म्यूट करके रखी थी। कहाँ चले गए भैया बाय करके? हाँ नाम लेते एंट्री। हेलो हेलो रवि भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। रवि भैया जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो? अभी तो आपका नाम लिए थे, तुरंत आप पधार दिए। जय भीम नमो बुद्धाय भैया। आज मैंने म्यूट करके बर्तन धोया है। मुझे पता था कि रवि भैया आके चिल्लाएंगे बर्तन वाला, इसीलिए। अबीर भैया जी चले गए, सोच रहे हैं सिस्टर सो गई। किस्मत बहुत खराब है इसीलिए मैं आ गया हूँ। आपकी खराब होगी बट मेरी नहीं खराब है भैया, मेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है कि आप लोग हमारे लाइफ में हो। लाइव नहीं लाइव। आपकी साथ खराब हुई, हमारी तो बहुत अच्छी है। हटो बेटा, थोड़ा सा श्रेयस साइड जाओ, मैं काम कर लूं। अपना काम कर लो बाबू, परेशान नहीं करते हैं ना। मेरी खराब है दीदी जी। क्यों भैया बताओ क्यों? भैया क्यों बताओ प्लीज, अब बताना पड़ेगा आपको, ऐसा काहे बोल रहे हो? जल्दी बताओ। रवि भैया बताओ फास्ट फास्ट। क्या हुआ भैया बताओ। जल्दी बताओ भैया बताओ, मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगी, आप बताओ। आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? कुछ नहीं दीदी मैं ठीक हूँ। तब काहे आप बोले हो मेरी किस्मत खराब है? तब ऐसा काहे बोले हो भैया? ऐसा काहे बोले फिर आप बताओ। ऐसे ही दीदी जी, ऐसे नहीं, कोई रीजन तो जरूर है जो आप बताना नहीं चाहते हैं। वीर जी कहाँ हैं आप? वीर भैया जी ना चले गए क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी, म्यूट करी थी। भैया क्या कमेंट में डाले, सो गई हो क्या सिस्टर? चलो मैं चला, बाद में आता हूँ, इसलिए चले गए।
कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। बिल्कुल राइट भैया, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जिंदगी में दो चीज अचानक आती है, एक वक्त और दूसरा बुरा वक्त। सही बात है भैया। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार काम आएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, थैंक यू। आपने बात बहुत अच्छी बोली है। एक एहसास ही बताता है रिश्तों की गहराई, वरना रिश्तों को तोड़ने का कोई तराजू नहीं होता। बिल्कुल राइट भैया, थैंक यू सो मच। सब नहीं समझते हैं भैया, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इनका वक्त खराब है तो और ही इनको मजबूर करें। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, जिन्हें गंवाना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल।
हाँ जी रवि पाल जी, स्वागत है वीर भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप बोल बोल के चले गए भैया, कैसे हो भैया? आ गया रवि पाल जी। कैसे हो वीर भैया जी? ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। बस थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगा, पार्टी जाना है। कितना पार्टी में जाना है भैया? कभी हम लोगों को भी घुमा दो ना पार्टी में। रवि पाजी, आज आपको रुकना है शारना सिस्टर की लाइफ पर लास्ट तक। मैं शायद ना आ सकूं। रवि भैया कहाँ चले गए? और बताओ सिस्टर, क्या कर रही हो? आटा लगा रही हूँ वीर भैया जी। जब आप आए थे ना तो मैं बर्तन धुल रही थी। बर्तन बहुत ज्यादा खटर पटर कर रहा था, इसलिए मैंने म्यूट करके रखा था। मैं सोची ना कि रवि भैया आएंगे तो चिल्लाएंगे बर्तन वाला, इसीलिए म्यूट कर दिया था भैया। हाँ, आप बोले कि सो गई हो, फिर मैंने देखा वीर भैया जी तो चले गए बाय करके। मैं सोई थी नहीं।
अब वीर भैया जी के बुलाने के चक्कर में रवि भैया निकल गए। क्या पता चला वीर भैया जी आ गए, रवि भैया जी कहीं खो गए। अब उनको कौन बुलाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सोनू भैया, सोनू पाजी तो आज दिल्ली जा रहे हैं, मुझसे नहीं बताए हैं भैया, मुझे नहीं मालूम है, यही हूँ। सोनू भैया मुझसे कुछ नहीं बोले हैं, मुझसे नहीं बताते हैं अब कोई बात। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, जिन्हें गंवाना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। सोनू पाजी क्यों? जय भीम नमो बुद्धाय पाजी, सोनू भैया बोल रहे हैं। जय भीम रवि भैया जी, रवि पाजी किधर चले गए थे? बस वीर जी यही था मैं। मुझे लगा कि मुझे ढूंढने चले गए। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी भी नहीं आती। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, आपकी बात बिल्कुल राइट है। रवि पाजी मेरे तो ऊपर से निकल गया। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट से में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। कुछ लोगों की आदत होती है भैया, रवि भैया, मेरा मानना अगर किसी को हम अच्छा नहीं कर सकते किसी के साथ, तो बुरा ही क्यों करें। रवि पाजी समझ नहीं आ रहा। वीर भैया को समझाइए रवि भैया। बुरा नहीं, ज्यादा बुरा करो।
समझाओ, मेरा दिमाग मोटा है। ऐसा नहीं है वीर भैया जी, आपको अपने आप में लगता होगा, लेकिन हम लोगों की नजरों में नहीं ऐसा लगता। जिंदगी जाने क्यों दूर सी होती जा रही है, थोड़ी मजबूर सी होती जा रही। जितना भी रख लूं संभाल कर पाऊं, मगर जख्म पर बड़ी नासूर सी होती जा रही है। कैसी बात कर रहे हो वीर जी आप, ऐसा कौन बोलता है? रोशनी जिस पे पड़ी सितारा हो गया, अंधेरे में जो रहा गुमसुम आवारा हो गया। हो जो पहुंचा किसी मुकाम पे सबके लिए हमारा हो गया, जो भटकता रहा राह में सबके लिए बेचारा हो गया। बिल्कुल राइट भैया जी, रवि भैया जी बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच।
पुरुष से नारी पुरुष से पूजा नहीं चाहती, वह जीवन में सहयोग चाहती जो को सुख के साथ तन और मन का विलीनीकरण दो जीवनों का एक होना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है आपकी।
एक्टिविटी के लिए क्या लेके जाना है श्रेया? बता देना, फिर सामान आ जाएगी टाइम से। कर लो आराम से। क्या नहीं समझ में आ रहा है पाजी? सोनू भैया वीर भैया जी चले गए हैं। खाना बन गया? हाँ भैया बन रहा है, अभी बन रहा है भैया। आज आप अपनी लाइट क्यों नहीं चलाए? क्या बन रहा है? मैं तो सब्जी रोटी बना रही हूँ, बाकी हस्बैंड ने अंडा बनाए थे, वो लेके अपना जा रहे हैं। उनके लिए अंडा बना था और मैं सब्जी रोटी बना रही हूँ अपने लिए। आज मन नहीं किया था चलाने का। क्यों? क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है क्या भैया? ठीक है, फिर क्यों? बिजी थे किसी काम में?
कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ। क्यों हंस रहे हो सोनू भैया? हमको भी बताओ, हम भी हंसें। बन गया कि नहीं, अभी और समय लगेगा। रोटी बन गई है, सब्जी होती रहेगी, फ्री हो गए हम।
अब क्या चाहिए? हाँ? क्या थे? उस पे है ना सिलेंडर बोलो उस पे देखना। हाँ मिला छोटे मिला। कोई नहीं, मत दो मत दो।
रख दो, किसी की हो वहां पे रख दो, आराम से रख दो वहां पे। नहीं आती है, मैं फेंकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सोनू भैया। क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान, नीला सलाम दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। भारती भाई कैसे हो आप? मेरी तबीयत ठीक है भाई, आप बताइए आप कैसे हो? भारती भाई आप बताइए आप कैसे हो? सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भैया। क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। देखो बहुत ज्यादा। जय भीम भैया। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, जय भीम, थैंक यू सो मच। काम कर लो बेटा बैठ के, ऐसे नहीं बदमाशी करते हैं छोटी। बाबू आ रहे हैं, दरवाजा खटका दो। खुश नसीब है वो बहन जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है, चाहे कैसी भी हालात हो, ये भाई बहन का रिश्ता साथ होता है। कर लिया। बिल्कुल राज भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लीव कर लिया। लीफ अभी इधर भी करनी है, ग्रीन जितना इधर है सब ग्रीन करनी है। अब वो जो पिंक का पहले ग्रीन कर लो, जब वो सूख जाएगा ना। येलो सूख गया है। येलो सूख गया कोई बात नहीं, पहले ग्रीन भी कर लो नीचे से, फिर उसके बाद मैं अभी बताऊंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ग्रीन दोनों बनाए हैं। कैसे कलर कैसे बनाए हैं ये कलर दोनों?
एक तो हरा। अच्छा मतलब तुमने इसमें व्हाइट डाला है तो कपड़ा में डार्क निकाला, थोड़ा सा व्हाइट ऐड किया, ठीक है? और फिर ये व्हाइट मतलब व्हाइट कम था तो मैं मतलब मेरे को डार्क ग्रीन करना था। थैंक यू भैया, थैंक यू। थोड़ा सा पेंट से यहाँ पे निकाल लिया, फिर इसमें व्हाइट ऐड करके फिर मैंने ये लाइट ग्रीन बन गया और ये डार्क ठीक हो गया। या ब्रश चला एक मिनट। और इसमें मोटा ब्रश है, ये पतला वाला तुम्हारा खुला नहीं बना तो इसमें नहीं आता, मेरा तो खुला है। चल मैं अपने पेज से निकाल देती हूँ बैग में से। मम्मी ग्रीन कर लो। हाँ ग्रीन मम्मी कलर। आउटलाइन में मतलब जैसे मैंने ये लीफ करी थी, आउटलाइन में सब डार्क ग्रीन कर लो। अभी नहीं, पहले सूख जाने दो पेंट, उसके बाद लीव्स कर लो, लीव्स का। हाँ लीफ अभी कर लो, क्योंकि अभी फिनिशिंग नहीं आएगा, गीले पे कर दोगे तो। देखो मेरे पास कलर है, थोड़ा सा ड्राई होने दो। मेरा वाला भी नहीं खुला है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये काया मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएगी, मौत जब आएगी कोई आवाज न आएगी। जिंदगी की किताब का ये अंतिम पन्ना है, मौत वो सच है जिसे सबको समझना। बात तो आपकी सही है भैया, पर ऐसा दिन समय से पहले किसी के साथ ना आए। अपना काम करो, इतना शोर मत मचाओ बेटा। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। क्यों भारती भाई, कुछ काम करने जा रहे हो? जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए? मम्मी तुम्हारी सब्जी लग रही है, बंद कर दूं? अभी नहीं, उसको इसे पकने दो हल्के से। अभी होगी? हाँ। किसके लिए, एक बार चला देना शायद। किसके लिए जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए? बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट है आपकी बात। मेरे पास इतना समय था आपके सपोर्ट के लिए। ओके भैया, अपना ख्याल रखना भारती भाई, थैंक यू सो मच।
आहिस्ता चलिए, जिंदगी कुछ फर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ कर्ज निभाने बाकी हैं। पापा टूट गया। थैंक यू भैया। अब मैं किसी के लाइफ में नहीं जा रहा हूँ, आपके लाइफ में आया हूँ। अपना ख्याल रखना दीदी। सेम टू यू भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। भारती भाई, आप सभी भाई अपना अपना ख्याल रखें। जय भीम, नीला सलाम दीदी। पूजा दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसी हैं आप? कल शुक्रवार तो शनिवार छुट्टी रहती है भाई अभी मत जाओ। और सैटरडे को भी, तो सैटरडे को शनिवार और उस रविवार को भी आकाश की भी छुट्टी रहती है। कहाँ जाना है? नहीं, पार्क? हाँ। पगली देखती रहती है। दीदी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ दीदी। पूजा दीदी मैं ठीक हूँ। और बताइए, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पूजा बहन। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। कैसी हो सिस्टर? खाना पीना हो गया है प्याज? हाँ तो पागल भाई। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। थैंक यू सो मच भैया। सॉरी पूजा दीदी। क्यों सॉरी बोल रहे हो भारती भाई? दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, सब बह जाते हैं इसमें। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% राइट है। नहीं कार्याला भाई, क्या बहन क्या बोल रही हो? करेला बनाई हो? नो सॉरी भाई। पूजा की जगह प्याज लिखा गया है दीदी। हाँ भैया, मैं भी वही सोच रही थी, इसलिए सॉरी बोल दिया। मैं भी पढ़ी तो वही सोच रही थी। भाभी एक मिनट और थोड़ा सा बोलना नहीं बहुत जल्दी है। मेरा पॉपकॉर्न का पैकेट हाँ वही मेरा पता है। मम्मी कर लिया। ठीक है, जब सूख जाए पेंट तब ऐसे करो। यहाँ पे भी करना है। हाँ। अरे अम्मी,
कोई बात नहीं है भाई, नहीं हुआ है तो खिलाऊंगी सभी को। ओके, अब मैं चला दीदी जी, दुआ में याद रखना। ऐसा ना बोलिए मेरे भाई। रवि भैया दुआ में नहीं, हमेशा याद रखते हैं आपको, हर पल याद रखते हैं आप लोगों को। इस बहन का आप ही लोगों का बस सहारा है, ये समझिएगा। वैसे भी कभी कभी कोई बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, आप लोगों को पता अच्छे से। थैंक यू भैया, रवि भैया थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप लोग इस बहन को इतना समझते हो, एक भाई की कमी को पूरा करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जा भाई आ जाइए मेरे घर। सिर्फ भैया को ही बुला रही हो पूजा दीदी? पूजा दीदी सिर्फ भैया को बुला रही हो? हमें भूख लग रही है। मैसेज जल्दी जल्दी करो पूजा। लाइव चालू करके भाई मैं कुछ काम कर रही थी, मेरी परी बेटी बंद कर दी। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं? नहीं। हाँ नहीं। हाँ बेटा बोलो। ये देखो मैंने ये पूरा कर लिया। लाओ एक बार दिखाओ। अभी ग्रीन वाले सूखने दो, इसे छोड़ दो फिर बेटा तुम। मैं यहाँ पर कौन सा कलर करना है? यहाँ पे तो ऐसे दिया है, ग्रीन पे डार्क ग्रीन पे ग्रीन पे लाइट ग्रीन। तुम लाइट ग्रीन करके साइड साइड से डार्क ग्रीन से शेप दे दो, ऐसे सही हो जाएगा। जैसे अभी ये वाला करी हो ऐसे ही करना है। मम्मी ऐसे कर दो, पूरे में लाइट ग्रीन कर देता, फिर ऐसे ऐसे करके उसको शेप दे दूंगा। हाँ डार्क ग्रीन ऐसे ऐसे देखो ऐसे। हाँ सही रहेगा। जो आ रहा है मैं कर दूं? हाँ बीच में एकदम लाइट करना, फिर डार्क से ना शेप दे देना, सही हो जाएगा। मम्मी मैं ऐसे कर देता हूँ मम्मी। कितनी बार? देखो मैं ना यहाँ यहाँ पूरा लाइट ग्रीन कर देता हूँ, उसमें फिर जो ये वो डार्क ग्रीन थे ना उनकी लाइन बना दूंगा, बन जाएगा। हाँ ऐसे कर ठीक है। हाँ ठीक है। पागल भाई, पागल हो गए हो क्या? आपका जो मर्जी वही हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे हो भारती भाई? नहीं मैं पहले से ही पागल हूँ। बोलोगे भाई तभी पूछूंगी। पूछो।
भाई से बहन को भी इजाजत की जरूरत होता है दीदी। बिल्कुल भैया, जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई से बिना इजाजत का काम किया जाए, जरूर होता है भैया। अब तो नहीं पूछूंगी भाई, जरा पगली को समझा दीजिए। अब मैं जा रहा हूँ तो समझाने से कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं से धो के आता हूँ फिर अपने पेट क्यों? क्योंकि ये पूरा बाहर गया है वैसे। कोई बात नहीं, ग्रीन में पहले इसको कर लो, बार बार नहीं करते। ग्रीन तो हो गया मेरा पूरा। अभी तो नीचे भी करना है ग्रीन। मैं ब्लू करने जा रहा हूँ। ब्लू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो एक साइड कर लो इसमें बीच में करके। इन दोनों में हाँ, तो डार्क ब्लू और ब्लू की जरूरत है। तो हमें पहले लाइट ब्लू बनाना है, तो इसलिए पहले डार्क ब्लू लेंगे। काम करना, किसी बात को पूछना, दोनों में फर्क होता है दीदी। बिल्कुल भैया, होता तो है हमेशा, लेकिन आप लोग को बस सोच के काम करो तो अच्छा ही होता है। और सुनना का मैं आई हूँ तो आप क्यों जा रहे हो भाई? मेरा फोन चार्ज नहीं है पूजा। चार्ज लगा कर काम करो भाई। मैं चला जाऊंगा, जल्दी से पूछो। कितना % चार्ज है भाई? ये छोटी छोटी, एक बार देखना बेटा, वो किचन किसने खोला है? किसी ने नहीं खोला। खुला किचन बंद कर दो, नहीं तो ऊपर से बिल्ली आ जाएगी, दूध दूध गिरा देगी, क्योंकि ऊपर वाला गेट खुला है। हाँ, मैं वो पूछना था लौकी खा लूं। कौन पूछा? अरे मैं अभी गरम, अभी मैं देती हूँ। ये ब्लू वाला मेरे को एक बार कर 3% है, ज्यादा नहीं है, बस उतना बहुत है। ये ब्लू वाला करके दिखा दो मेरे को थोड़ा सा। उतना ब्लू नहीं लेना, उसमें व्हाइट भी मिलाना है। करके दिखा दो। ये डार्क ब्लू हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला ब्लू करना। हाँ, ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू है, क्योंकि इसमें लाइट ब्लू और डार्क ब्लू है। बस ले लो। इस पर पूछो अच्छे से, क्योंकि फिर कलर अगर उसमें नहीं कोई बात नहीं। उनको जो करना होगा ना, इसका अंडरलाइन भी कर दूंगा डार्क ब्लू से। लाइट ब्लू और बनाऊं? हाँ, लाइट ब्लू और बनाऊं? बना दूं? तो ठीक है। मैं अपनी पूरा पेंटिंग कर रहा हूँ। मैंने पूरा करा, बस मम्मी कर रहा है। उसे वैसे नहीं करते हैं। इसमें मत करना, इसमें डाल दो। हाँ, दे देना, इसको कलर बना के दे देना।
इसको वाला? दिखा के अभी इसको सूख जाने देना है ना। मैं खुद से करूंगा हाँ ये खुद कलर बना देगा ये वाला। इसमें थोड़ा सा ब्लैक या ग्रीन ब्लू मैं भी खाऊंगा, मुझे भी खाना है। ठीक है जाइए भाई, पूछो तभी जाऊंगा। मैं भी जा रही हूँ भाई, खाना खाने आइए आप लोग भी। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा फोन बंद नहीं होगा। नहीं भाई फोन को चालू रखो, इमरजेंसी किसी की कॉल आ सकती है। फोन को चालू रखो भारती भाई। छोटू इसको तो डस्टबिन में डालो। मम्मी मैं पास्ता मसाला और पास्ता लेकर आई।
बाय पूजा दीदी, थैंक यू सो मच। जल्दी हटो यहाँ से। अब मुझे भी जाने को इजाजत दे दे दीदी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू, आप जा सकते हैं। अब मैं भी खाना चाहता हूँ। खाना खा लीजिए भैया, नहीं तो आइए हमारे घर खा लीजिए, खाना बना दिया हमने। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भैया, थैंक यू। अपना ख्याल रखना दीदी। बिल्कुल भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय भैया, भारती भैया, बाय बाय। खाना पीना खा लेना टाइम से। क्या होगा? बदमाशी मत करो बेटा, रख दो। करो नहीं फोटो। नहीं, फोटो नहीं खींचना। इधर मत। इतना क्यों हंस रहे हो सोनू भैया, हमको भी बताओ।
सबको हंसते देखा इसलिए मैं भी हंस लिया। ओके भैया, हंसना भी जरूरी है। चोट लग गई। चोट लग गई। अभी नहीं, आप खा लिए? चोट लग गई। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। ये तुम्हारे पेंट कर रहे हैं। ये तुम्हारा कलर कर रहा है, देखो। उसमें मत भरियो। उसमें यही रहेगा।
जय भीम प्रमोद भैया, थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? आप कैसे हो भैया? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। थैंक यू सो मच। खाना पीना हो गया आपका? ओके भैया, थैंक यू। मस्त ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आपका? ठीक है भैया, तबीयत ठीक है। हाँ, अभी खाना खाया। ओके भैया। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ, आप बताइए।
यश के एंटरटेनमेंट। जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय। भैया स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? क्या बात है कंचन जी, बहुत उदास हो गया क्या? कुछ नहीं भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप बताइए, आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं? बाय भैया। अब मैं जा रहा हूँ अस्पताल में, इसलिए। अस्पताल में क्या कर रहे हो भैया? किसी की तबीयत खराब है क्या? किसी की तबीयत खराब है क्या भैया?
अच्छा, गांव में हो कि दिल्ली आ गए अभी? अभी गांव में हो, दिल्ली आ गए भैया? बॉर्डर उठा के ला रहे हैं वहां से मेहनत कर रहे हैं तो उठाने की कोई उम्मीद नहीं है उससे।
लेके आओ, उस कमरे में किचन में है, आ जाओ निकाल दो। हाँ, दोनों निकाल। कौन से दोनों? दोनों नहीं, एक ही निकालो, ठंडा लगेगा रात में। गर्मी नहीं, गर्मी नहीं, रात में कंबल भी नहीं ओढ़ते, आज से ठंड लग जाएगी। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। अभी सोए नहीं आप? सोए नहीं भाई अभी? लेके आओ, उस कमरे में किचन में है, आ जाओ निकाल। किचन से निकाल लिया। भारती भाई आप क्यों नहीं सोए अभी? खाना ना खाए? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी, थैंक यू भैया, सेम टू यू। खाना खाए कि नहीं? अभी कितना समय हुआ है दीदी? 10 बजने वाले हैं भैया, 6 मिनट बाकी है। थोड़ी देर में आ रहा। मेरा सोने का समय नहीं हुआ है दीदी, कब सोओगे भाई? आपका सोने का समय कब होगा? मैं तो रोज 1 बजे तक जागता हूँ। सो जाया करो भाई। आप खाना खा लिया है दीदी? हाँ भैया मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया भैया। मैं आज अकेला हूँ रूम पर। क्यों भाई, क्यों अकेले हो? मेरा रूम पार्टनर भी चला गया है घर। अच्छा भैया। और मैं जब अकेला रूम पर रहता हूँ तो खाना समय पर नहीं खाता। होता है भाई, जब 1-2 लोगों के बीच में खाओ ना, अकेले नहीं खाने का मन करता है। थैंक यू, थैंक है शिवांशी। सो जाओ बेटा, सुबह उठोगे नहीं ना, मुझे पता है। मेरे को मत जाना देना। कहाँ? स्कूल। क्यों? नहीं जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं, सैटरडे संडे वैसे भी 2 दिन की छुट्टी रहेगी। कौन? आकाश है, खोल दो, खोल दो। थैंक यू भैया, थैंक यू। बंद कर दो, बंद। ये पर्दा खींच दो, पर्दा खींच दो। वो वाला नहीं, ये वाला, हाँ खिड़की वाला। अरे
हम लोग का खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है दीदी, अकेले रहने में। हाँ भैया, दिक्कत तो होता ही है, मैं समझ सकती हूँ। भांजी बहुत परेशान करती है ना दीदी? नहीं भैया, भांजी नहीं परेशान कर रही है, हमारा भांजा एक आया है, छोटा सा भी है, 2-2.5 साल का, और वो परेशान कर रहा है, सोने नहीं देता है, बार बार दरवाजा खोल के यहीं आने, अभी बंद कर दिए, रो रहा बाहर। हमारे बेटे के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, सोने नहीं देते हैं। पता नहीं रो रहा कि गा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ये कर रहा है, रो रहा है ना? मम्मी ये कर रहा है। अरे कौन सा सुर में ऐसे गाता है। आप समय पर नहीं तो सो रही हो और नहीं खाना खा रही हो। नहीं भैया, खाना खा लिया मैंने, टाइम पर खाना खा लिया, दवाई खा लिया। हाँ, ये है कि अभी थोड़ा सा शोर शराबा है ही है। अभी सब लोग हैं, अभी जाएंगे अगले महीने में 5-6 तारीख तक घर। अभी तो पूरी फैमिली यही है, और रिश्तेदार में भी लोग, अभी 6-7 लोग हैं अभी। नहीं, खाना खा लिया, बच्चों से पूछ लो, मैंने खाना खा लिया और दवाई भी खा ली। खाना खा लिया भी हमने, दवाई भी खा लिया। वो रो रहा है कि गा रहा है? पता ना बेटा, रो रहा गा रहा। मत जाना बेटा, फिर आने नहीं देगा, फिर रोएगा, टाइम से सो जाओ। क्या रखा दीदी, मुझे कभी एक बात सोचकर हंसी आता। क्या बात? अंगुली दब जाएगी बेटा, ऐसे अचानक से दरवाजा मत बंद करो, बच्चा कहीं लग जाएगी चोट वोट। गा रहा है वो। हाँ तो ठीक, अब सो जाओ, अब मत जाना, अब सो गा रहा है जाओ। वो। ठीक है, गाने दो। गाना। लेकिन बात क्या है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों भैया, क्यों नहीं बताओगे? मनोज भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच भैया, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हैं बड़े भैया जी? मनोज भैया कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया?
बताओ भारती भाई क्या बात है। जय भीम भैया जय भीम। इसमें मुझे और आपको फायदा है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। जिसमें नुकसान रहेगा उसको बताओगे, जहाँ फायदा रहेगा वहां नहीं बताओगे। ऐसा क्यों भाई। जय भीम भैया, मनोज भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। मेरा ट्रिक काम कर गया है। क्या ट्रिक भैया, आपका फीवर अच्छा हो गया? बताओ, एक कहानी सुनाओ फिर से। दीदी बिल्कुल भाई सुनाओ। मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा भैया बताओ। सब बढ़िया है, अपना बताइए। हम भी ठीक है भैया। आप टेंशन में हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भारती भाई, आप बोलो मैं सुन रही हूँ। थैंक यू भैया, मनोज भैया थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा तो तबीयत बहुत पहले ही सही हो गया है। झूठ बोलते हो भारती भाई। पर मैं नहीं बताऊंगा कहानी। क्यों भैया? थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू, क्योंकि आप सुनती नहीं हो। मैं सुनती हूँ भैया, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ। मेरे माइंड में अब कोई चीज जल्दी नहीं होती है। ज्यादा गहराई से कुछ सोचती हूँ तो भी दिक्कत होती है, इसलिए सुनती हूँ पर उतना समझ में नहीं आता। इसके लिए सॉरी। थैंक यू भैया, मनोज भैया थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया। और कहानी बहुत बड़ा है, मुझे लिखने में काफी ज्यादा समय लगेगा। ओके भैया, कोई बात नहीं है। मनोज भैया थैंक यू। मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। दीदी कोई बात नहीं है भैया। भारती भाई कोई बात नहीं है। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू सो मच। मेरा एग्जाम जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। भारती भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है आप किसी के लाइव में ना जाइए प्लीज। एग्जाम के टाइम में आप अपना फुल टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई में। मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उस कहानी से आपका माइंड सही रहेगा। अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ दीदी। ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप जा सकते हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से कोई वो नहीं है भैया। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, आप अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं किसी के लाइव में नहीं जा रहा हूँ दीदी। मुझे पता भैया नहीं जा रहे हैं आप। सिर्फ आपकी लाइव में आता हूँ। मुझे मालूम है भैया, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत। जितना भी आप सभी का धन्यवाद करें बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोग ऐसे हो भाई जो हमारी फीलिंग को समझते हो। थैंक यू सो मच मनोज भैया, थैंक यू। अपना ख्याल रखना दीदी। सेम टू यू भैया। भारती भाई थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई पूरी लगन से कीजिए भैया। एग्जाम कब खत्म होगा भैया आपका?
अब आप सोच सकती हो कि मैं कितना अपने आप में बदलाव लाया। लाना ही चाहिए भैया, समय के हिसाब से। बस कुछ देर के लिए आ जाता हूँ आपके लाइफ में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आप नहीं आएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपकी पढ़ाई, हाँ 1-2 मिनट के लिए आएंगे ना तो भी चलो कि आप आए थे, बस 1-2 कमेंट कर दिए, हमें उतने बहुत वो है कि आपका हाल खबर मिल जाए इतना। मेरा एग्जाम 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है दीदी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। आप जितना हो सके अपना पूरा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई पर। लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। लाइफ में क्या होता है कि एक दूसरे की बात पे बात, कभी कोई बात आ जाती है, वो भी माइंड में घूमती रहती है। अभी ना जाओ किसी के लाइफ में तो अच्छा है, मैं यही कहूंगी आपसे। अब मैं जा सकता हूँ दीदी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं भारती भैया, आप अपना ख्याल रखना और जाइए आप। मैं सभी आईडी से कमेंट करके चला जाता हूँ, मैं ज्यादा समय कहाँ देता हूँ आपके लाइफ में। मेरे लिए इतना समय बहुत काफी है भैया। आपका इतना समय मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपका 1 मिनट का भी समय बहुत कीमती है। धमरात्रि दीदी, सेम टू यू भैया, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय भारती भैया, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू भैया। खाना पीना खा लेना अगर नहीं खाए हैं आप तो।